Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. We have started the chapter lines and angles. Yes, sir, we are watching the video. Okay, I was showing you a video. We were not able to complete the video. We had just started it. Afternoon, sir. ठीक है बेटा मैं I am going to show you the video. Good afternoon, sir. Good afternoon. Be ready, everyone. Okay, I am going to start the video. All of you pay attention. Okay, sir. Watch the video carefully. Be very attentive while you are watching the video. It is a very important video. Okay. Okay, watch the video. A few days back, I went trekking with my younger brother Nishan. Interestingly, this fun A few days back, I went trekking with my younger brother Nishan. Interestingly, this fun trip became a beautiful lesson in geometry for him. Thankfully, we had recorded it on camera, so let me share it with you. Look, the stars appear much brighter here than the city. Yes, and I can also see a group of stars that appears like a question mark. I want to draw this. Can you help me? See, first you draw points showing the position of stars and then you join them. Oh, it seems as if I am giving you a geometry lesson. Geometry? What is that? Geometry is a branch of mathematics that deals with shape, size, position of figures, and properties of space. Oh, please tell me more. To tell you more, I'll have to take you around 2300 years back to a man named Euclid. 2300 years. Wow. Euclid was a Greek mathematician and was known as the father of geometry. In 300 BC, he wrote a book in which he organized and proved all the knowledge of geometry we have till date. Geometry is the English translation of the Greek word geometron, where geo means earth and metron means measurement. But what is the use of geometry? Geometry helps in understanding different shapes and their properties and relations in real world. Geometry has applications in the field of architecture, astronomy, designing clothes and machinery. In fact, geometry has applications in almost all spheres of life. Oh, wow. And this all begins with a point. A point? Yes, look here. These dots that we mark to show stars are points. The almost invisible tiny dot gives an idea about point. A dot as small as you can imagine. Oh, this is a point. How can this be so important? Point is the most important concept in geometry, howsoever small or insignificant it may seem. A point has no length, no breadth, no thickness, no shape or size, yet it shows a definite position. If a point shows a position, how do we differentiate these points? We denote a point by capital letter. No geometrical figure can be drawn without beginning with a point. Every geometrical figure should be named, and that starts by naming the points. Many points come together to form a line.
A line? Yes, a line is a straight path that extends forever in both directions. You mean it goes on and on? Correct. That is why we draw two arrows on it on either side to show it never ends. It contains countless number of points. We can never draw a complete picture of a line. How do we differentiate two lines? How do we represent them? We represent a line using small letters. Like I have denoted this line by small letter M. A line can also be represented using any 2 points on the line. And how can we do that? A line through points A and B is denoted as this. We put this small line with arrows on both sides to indicate that it extends indefinitely in both the directions. So, if I join any two of these stars, which are like 2 points, will that be a line? No, that would be a line segment. Line segment? What is this now? A line segment is a part of a line. It has two distinct endpoints. It does not go on forever. If I have point A and point B, then I can join them in different ways. Are they all line segments? No, the shortest route, that is the straight line joining points A and B, is called the line segment. It is represented as this. Okay, so it does not have arrows on top like a line has. Correct. This signifies that it has endpoints. Points A and B are the endpoints of this line segment. If I fold this paper, I get a line with two endpoints. This is a line segment. Now, can you think of some examples of line segments from your day-to-day life? Yes, joining 2 points of a tube light, edge of a book, edge of a ruler. So a line extends forever in both directions, but a line segment has two distinct endpoints. Wait, does that mean you can never measure a line? Right, Nishan. You cannot measure a line, but you can measure a line segment. We can measure line segments with the help of a ruler. Great, so I can now complete my diagram. This is how that collection of stars above looked like. See, points E, F, G all lie in one line. Yes, they are collinear points. What? I'll explain. 3 or more points are said to be collinear if you can draw one line that will contain them all. So among all these given points, B, C and D lie on a straight line, hence they are collinear. But points C, D and F are non-collinear. Similarly, points A, D and E are non-collinear. Okay, It's too late now. Let's go back to our tent. Wait, I'll switch my torch on. Oh, this reminds me that I forgot to tell you about rays. rays? Yes, a ray is a part of line. A ray starts from one point and goes endlessly in one direction. I have heard about sun's rays. Is it the same as the rays you are talking about? Yes, if you consider sun's rays, then they start from one point and move endlessly in one direction only. Here, they start from point A. Point B lies on the path of the ray. It is denoted as this. No matter what the direction of rays be, the arrows will always point towards right. So if PQ is a ray, its starting point, that is P, is also called the vertex. Q is another point on the ray. Remember that Q is not the starting point of this ray, so we cannot denote ray PQ as ray QP. Now I can complete my diagram with points, line segments and rays. Perfect. So a point is the almost invisible tiny dot
Many points come together to form a line, which is a straight path that extends forever in both directions. A line segment is a part of a line and has two distinct endpoints. A ray starts from one point and goes endlessly in one direction. Okay, all of you, this is a very important slide. Everyone, please pay attention. These are the four things which were explained in the whole video: point, line, line segment, and ray. So in short, you can now see that what is a line. A line you can produce in both the sides. Line has no definite length. लाइन कितनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अप टू एनी लेंथ लाइन, इसलिए इसके दोनों साइड में एरोज बनाए हैं. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड लेंथ. लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है. ठीक है. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं. एंड पॉइंट क्या शो कर रहे हैं? दैट इसको हम आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते लाइन सेगमेंट को. ओके. एंड देन देयर इज अ रे. रे क्या होती है? रे को आप सिर्फ एक साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. So that is why only one side is you can see arrow on only one side of the line. एक ही तरफ एरो बनाया है. And the other side there is an end point. That means उस साइड में आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. Okay. So these are the main things. Now let's sleep. Tomorrow we have to get up early and go for trekking. Yes, everyone, the video was clear. Everything was clear from the video. Yes, sir. Okay, so now I will make you write down some definitions. कुछ definitions आपको लिखनी है. Open page number 131 from your book. Page number 131. Lines and angles. Write the name of the chapter. And now you will write down the definitions of line. पेज नंबर 131 पे देखो, पिंक कलर से आपको दिख रहा है लिखा हुआ, लाइट पिंक कलर से. Tell about lines. लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. ठीक है. लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. सो लाइन क्या होती है बेटा? देखो, लाइन आप फिगर बनाना. बुक पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे बुक से. कैन यू ऑल राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक? सो दिस इज अ लाइन व्हिच हैज एरोज ऑन बोथ द साइड्स. ये फिगर भी आपको बनाने हैं. ठीक है. पहले डेफिनेशन लिखनी है बुक से, देन यू ड्रॉ द फिगर ऑफ लाइन, देन यू राइट द डेफिनेशन. अभी नहीं करना है ड्रॉ, अभी आद्विका ड्रॉ नहीं करना है अभी. फर्स्ट यू राइट डाउन द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक. बुक से पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ड्रॉ करना है. विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल से ड्रॉ करना है. ठीक है. Then you will draw a line segment. Line segment में दोनों साइड में आप देखेंगे that there are end points A, B, and the symbol for line segment is this. Sir. Yes. And then there is ray. Excuse me, sir. Yes, बेटा, ये यहीं पर देखिए, लाइन की डेफिनेशन भी दी हुई है, लाइन सेगमेंट की भी दी हुई है, और रे की भी दी हुई है ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 131 पे. ओके. हाँ, बुक में. यस. Sir, we have to write this. A line has no end point.
मैं बता रहा हूँ बेटा, पेज नंबर 131 आप सबने ओपन कर लिया होगा। इसकी Yes, पूरी sir. डेफिनेशन लिखनी है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ द साइड्स। अ लाइन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर लाइक ए एल टी एक्सेट्रा। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ये पूरा आपको लिखना है लाइन की डेफिनेशन में, ठीक है। फिर अ लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। A line segment is a part of a line. It has definite length. और फिगर यही वाले ड्रॉ करने हैं जो मैंने बोर्ड पे बनाए हैं, ठीक है बेटा। डोंट ड्रॉ द फिगर्स फ्रॉम द बुक। ऐसी पूरे लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। इट हैज अ डेफिनेट लेंथ एंड टू एंड पॉइंट्स। इट इज नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। फिर उसके नीचे जब आप आएंगे देन यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ अ रे। अ रे इज अ लाइन व्हिच हैज एन इनिशियल पॉइंट which extends endlessly in the direction of the arrows, like a ray of light। एक रे ऑफ लाइट की तरह एक ही साइड में हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर, बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में। ये इंग्लिश अल्फाबेट वाली जो बात बोली है इन्होंने लास्ट में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द थ्री एंड ड्रॉ द फिगर्स। करिए। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके, स्टार्ट राइटिंग।
Done? Have you all done? Yes, sir, I have done. Very good, Advika. What about others? बाकी बच्चों ने कर लिया बेटा. अविका, श्रियांश पटेल, कार्तिक. I am the last line पे हूँ. ओके, करो जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो. Okay, now I hope everyone has done it. Okay, everyone, let us now start with exercise 17.1, which is on page number 130. Page number 130 open करिए. Everyone, Open. open the page. Yeah. On page number 130, you can see that there is an exercise 17.1. The questions, both the questions from the exercise are to be done in the book only. Lines of symmetry आपको बस चेक करना है. First question में आपको चेक करना है that the lines which are drawn are lines of symmetry or not. Lines of symmetry you have studied in your previous class also. Yes, sir. Everyone knows the concept. Yes, तो sir. ये जो फर्स्ट शेप दिया हुआ है W लेटर बना हुआ है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सही बनाई है इन्होंने या गलत बनाई है? No. इट इज रॉन्ग. Sir, no. नो. सेकेंड फिगर में बताओ, इज इट करेक्ट और नॉट? Sir, it is correct. Yes. It is correct, yes. Both the pieces are divided, the shape is divided into two identical parts, mirror images of each other. ठीक है, identical part बन रहे हैं, mirror image बन रही है. थर्ड फिगर में बताओ बेटा. Sir, no. Sir, no. अगेन नो. फोर्थ में बताइए. Sir, yes. यस, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री. यस, करेक्ट है. फिफ्थ वाले The में fifth बताओ. one is also yes. Fifth one is also yes, correct. Okay, so write the answers in the book only. Sir, I have done. क्वेश्चन बी में आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन ऑल द शेप्स. ओके, सो ट्राई ड्रॉइंग दीज लाइंस ऑफ सिमेट्री इन क्वेश्चन बी. ड्रॉ करिए, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा कि आपने सही करा है या नहीं. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ऑल द पार्ट्स. फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ, जल्दी से करो, देखते हैं कि आप सबने सही करा या नहीं करा. ठीक है, जल्दी करो. Draw the lines of symmetry in question B in the given figures. Draw करिए सब में, अपने आप ड्रॉ करिए. Better to use a scale in this. Scale से ड्रॉ करो, ज्यादा अच्छा रहेगा. And then you will check your answers. I will show कि कैसे करना है. Correct method क्या है ये साध्वी का? Sir, I have done. You have done all. Yes, sir. अरे very good. Just wait for some time.
everyone. Let everyone complete. Yes. बताओ बेटा, have you all done? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, I am doing it on the board. You all will check your answers. ठीक है बेटा, कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे. आंसर्स चेक करिए. आप लोग 1 सेकंड वेट करिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा. देखो, यस हो गया, ड्रॉ कर दिया मैंने. कार्तिक बेटा, कौन से उसका लिंक सेंड कर रहे हो मुझे? किस चीज का लिंक सेंड कर रहे हो मेरे को बेटा? यस, दीज आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द फिगर्स. प्लीज चेक देम. Check them. Check your answers. First, there are 6 lines of symmetry in the third figure and 6 lines of symmetry in the fifth figure also. 3 lines of symmetry in the second figure. There could be more than 1 lines of symmetry. एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. Yes, हो सकती हैं. Yes, sir. तो मैं ऑर्डर कर रहे. Yes, all are correct.
Yes, sir. ठीक है, let's start the Only 6 participants are there. कोई बात नहीं. Okay, you have already written the definitions of line, segment, and ray. Now, do you all know how to measure lines? How to draw lines of a particular length with the help of a scale? लाइन सेगमेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ के, आपने सीखा हुआ है ये इन योर प्रीवियस क्लासेस? Yes, sir. Yes. आता है बच्चों? अच्छा, ओके, ओपन पेज नंबर 131. Sir, open. हाँ, इसमें देखिए, you will Exercise see 17.2. पेज नंबर 131, नॉट एक्सरसाइज 17.2. पेज नंबर 131 खोलो. इसमें देखो पैरेलल लाइंस आपको दिख रहा है, हेडिंग फिगर बना हुआ है पैरेलल लाइंस का. Yes, sir. पैरेलल लाइंस का फिगर बना है. So these are parallel lines. Parallel lines are those which never meet each other. जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं होती हैं. ठीक है, they never intersect. वेवी लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन होगी वो वेवी हो गई. कर्व्ड लाइन मतलब सिंगल कर्व होगा उसमें. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, बट वो लेटी हुई होगी, स्लीपिंग पोजीशन में होगी. एक स्टैंडिंग पोजीशन में लाइन होगी, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग पोजीशन में जो लाइन होती है, Sir, vertical. वर्टिकल. वेरी गुड, कमाल कर दिया. Then on the next page you can see a vertical line also. What is the next one? An oblique or slant line. This is an oblique line or a slant line. Oblique line भी बोल सकते हैं, slant line भी बोल सकते हैं. And then there are intersecting lines. Intersecting lines मतलब ऐसी lines जो एक दूसरे को कट कर देती हैं. दो लाइंस जो एक दूसरे को कट करके जाती हैं उन्हें बोलते हैं intersecting lines. Okay. So from tomorrow onwards, we will start how to draw line segments of a particular length. Very good, Avika. Good example. So tomorrow we will study. We will learn how to draw line segments of particular given length. कल से सीखेंगे with the help of a scale. Okay, thank you everyone for attending the class. Goodbye. Have fun. Bye, sir. Yeah. Multiplication sign is also an intersecting line. Sorry, beta. Sir, multiplication sign is also an intersecting. Yes. You are absolutely right. Sir, yes. And tomorrow we will also study